you have the good rapport, then you can enjoy your relationship. It that relationship with your friends, that relationship with a student and teacher, that relationship between your family members, anywhere. If you have the good rapport with that particular person, then you can really enjoy that uh, uh, relationship, and you can that relationship can be useful for your life. Yeah. So today we have the topic ki what kind of what type of the networking is required to do, what is the time, how you have to do the networking, at what time, सुबह में करना है, शाम में करना है, at what occasion, what should be the topic. Suppose that we have met someone, how you have to start, how you can discuss uh, with that particular person, how you start the conversation, frequency, how you, suppose that today we meet each other, how frequently we can discuss on phone, on email. So that what is the frequency. Suppose that today we have meet each other in a party or in seminar or webinar, and tomorrow just you have sent the hi message, good morning message, good night, and in a one day you have sent the 10 messages. So it will be the create the noise for me, or most possible I will not continue relationship with you. So that kind of the understanding we have to understand ki when we meet anyone, or we got any number, we got any data for the networking, then how frequent we have to discuss, or how frequent we can uh, contact that particular person. Then how we have to start conversation. The conversation start कैसे करें, at what location, what time we have met, and how we have to start. And last is the process, how we have to start the process. कि आप किसी से आज मिलते हो तो what is your process. आप suppose that we meet today, and what you do tomorrow, day after tomorrow, and after 10 days, whether you have taken action or you have not taken action. So there is a one process is that today we meet each other in a webinar or in a conference, and we have exchanged our card. I have given my business card, you have given your my business card. What you do with that particular business card, whether you have approached, whether you have called, whether you have mailed. If you have to do anything with particular person with business card, then how frequent you do. So there is some science, some art that you have to learn and understand. As we have and I had earlier mentioned कि अगर आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज भेजना शुरू कर देते हो विद द न्यू पर्सन, then that person can be very noise, or most possible that person will not continue rapport with you. Huh? With your family, with your friends to whom you know each other for the 5 years, 10 years, 20 years, then you can send the good morning message, good night message, and any kind of the message, joke, anything to that particular person. But जो व्यक्ति से जो right now we have met as a stranger in business conference or in a study seminar or in college or anywhere, so how you have to start. So and after starting, how frequent you discuss with them, and once you have बिजनेस कार्ड तो उसको कल कांटेक्ट करना है, 2 दिन के बाद कांटेक्ट करना है, आफ्टर 10 डेज 15 डेज. तो ये एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस है. तो आज हम इस प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम हमें मिलता है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप पार्टिसिपेंट से मेरा एक अनुरोध है कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 30. तो जैसे ही अगर मैं नहीं बता कर पाया तो आप लोग उस चीज को मेरे को बता देना कि मनीष आपको ये पर्टिकुलर प्रोसेस बताना है कि हाउ यू हैव टू यूज 24 7 और 30. तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्किंग, टाइमिंग ऑफ नेटवर्किंग, टॉपिक ऑफ नेटवर्किंग. तो जस्ट देयर इज वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कि मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड रिक्वायर 5 लाख रुपीज फॉर own self, किसी भी काम के लिए. सपोज दैट ही हैड some medical emergency in his family, or he required 5 lakh rupees both person.
Mr. X is a daily worker and his monthly income is approx 15,000 rupees. You can say 14, 15, whatever. And Mr. Z is a one white collar guy and his salary is a 40,000 per month. Tell me, yeah, you can amazing yourself कि अगर उसके फैमिली में there is a requirement of 5 lakh rupees, so who can arrange that fund in an easy way? As per my thinking, as per my experience, I will say Mr. Z can arrange 5 lakh rupees as soon as possible in comparison to Mr. X, because Mr. Z, which he has the income of the 40,000 rupees, so he will have the some colleague, he have the some good bosses, or he in his family most probably some person is earning more than him, or some person can earn more than less than Mr. Z. But for the 5 lakh rupees he can arrange. But if I talk about the daily worker, or who has any person who has the income of the 15,000 rupees, so that particular person can arrange, but it will get some more time. He will take more difficulties. So यहाँ पर you can understand the importance of networking. This networking can be with your friend, colleague, family, or anywhere. But how you have to create networking, or you have to create your network, so in future whenever you have need, whether in term of wealth, in term of help, in term of money, they can provide. So it is the most important key how you create your network. Now, so it is said your network is your net worth. जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा. Suppose that in your circle all person you are into job, but your all connection into business. So what will happen one day, once you have think about to start new business, what will happen, जितने भी आपके business वाले friend हैं, they can try to help you. कोई might be possible can say कि अरे I have the office in the south, why not you come in this around, this is a very good prosperity market, so why not you join this locality. Someone can say I am into kitchen and hardware item, this is the very good market in this category, please you can come and my yeah, that particular friend you can suggest, I have business in Delhi, you can start in Noida, we can have the franchisee model, etc. So I'm saying your network is become the network. So you have to create network with the reliable person, as well as that kind of the person that will help in future. Power of network, as you know कि Lord Ram, भगवान राम ने सुग्रीव से दोस्ती किया था, और both has provided the benefit to each other. राम ने सुग्रीव के भाई बाली को मार के he has given the kingdom to Sugriv, and Sugriv has searched Ma Janki with help of his Banar Sena, etc. So both Lord Ram as well as Sugriv has got the benefited with the with that relationship, with that networking. So you have in the Mahabharata, if you say the Lord Krishna and Arjun, both has been benefited. Lord Krishna can make the friendship with the Duryodhan also, but he was aware that Duryodhan is not right kind of the person, and he cannot do the right kind of activity for the human. So he created the network with Arjun, and वहां पर उन लोगों का रिलेशनशिप ग्रो किया और वो आगे काम किए. अकॉर्डिंग टू द इन द मॉडर्न टाइम, यू कैन से महात्मा गांधी एंड नेहरू, whenever both was supporting each other, so that ये जो independence का time था, after that how the Nehru became the prime minister, etc. All we know कि both person support each other. So it is the power of networking. कि how what kind of the person you have to make a relationship, create the rapport, and that rapport will create power in your life. And in the entertainment industry, if you think
Shahrukh Khan is a Yash Chopra, because you have seen that Shahrukh Khan given the lots of blockbuster with the Yash Chopra, but after that Shahrukh Khan is not able to provide the such kind of the blockbuster. So now question arises ki what is the type of networking? If you start with your family, then you have to do no effort, because जब आप पैदा होते हो, then brother, sister, uncle, auntie, बुआ, मौसी, each and every relation is provided to you. हाँ, धीरे धीरे जैसे as you grow you have to maintain relationship, वहां पर आपको effort करना होता है, but once you born there is no effort for yourself, and God or your family provided at least 100 or 200 connection to you. अब ये it is up to you कि how you use that 200, 300 or 100 relationship in future. कि आप अपने चाचा जी से, बुआ से, मौसी से, या फिर अपने कजन से, how you create the relationship, that will depend. But without any effort, Lord has given the 200, 300 relationship to you. Once you start going to school, then you make friends. यहाँ पर you have to do some effort. कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट होते हैं, then you have to choose कि who will be your best friend, who will be your friend, who will be your hi hello friend. तो यहाँ पर you have to choose, so you have to make the some effort कि आप उसके साथ जाते हो, स्पोर्ट्स में भाग लेते हो, या उसके बेंच पर बैठते हो, you have to discuss lots of things, you have to understand, you have to create the rapport. तो वहां पर कुछ ना कुछ effort होता है, but in family there is no effort. Now if we talk about profession or business or job, then यहाँ पर it is the offline as well the online. जैसे आज के डेट पर we are creating the online communication and online networking, then you have to give the 100% effort, because आप किसी जॉब में जाते हो, it is not just like the family, just like friend. फैमिली में तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा, फ्रेंड में भी कुछ फ्रेंड आपके साथ खड़ा होंगे, चाहे आप कुछ भी करो, बट when you have join any job or any business, तो वहां के जो आपके आसपास के जो कलीग हैं और any other person who will not be with you unless and until you have created very good rapport with them. तो यहाँ पर आपको 100% you have to give the effort to make good relationship. Now, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग कि कितने टाइप का नेटवर्किंग होता है. Now, pre-lockdown, जो मार्च 20 से पहले जो था, that was the offline networking. If we talk about the online networking, then it was the thing कि no, it is not possible. But you know, after March 20, everything is possible, and every conference, webinar, seminar is happening online. We are taking the online classes, we are giving the online classes, we are doing the exhibition, we are doing the networking platform, we are doing the networking seminar, webinar, everything online. So during lockdown or after lockdown, physical meeting is not happening. Then जो ये आपका जो टाइप ऑफ नेटवर्किंग हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन, हाउ यू विल क्रिएट. सपोज दैट वी हैव मीट टुडे, and after meeting, whether you have any option, whether you have any process, whether you have any flow कि how you have to discuss with some other person. Today we are the 9%. तो आप 9% क्या एक दूसरे को जानते हो? नहीं जानते हो तो you have to follow your process. Suppose that you are daily coming here, or you have you know कि who is other person, but you are not creating rapport. So what will happen? Just you are consuming time, because you have consumed time for the 40 minutes, 45 minutes, 1 hour, and you are not able to create rapport with other person. Then what will happen? Definitely you are getting the some knowledge from some expert person, that is the one thing. But once you have created the rapport with from 10, 12, 20, 40 person में से 1 or 2 से भी आपका rapport create होता है, then धीरे धीरे it will create the your network data bank, because एक दिन में एक बार आप you cannot have the networking of the 100, 1000, 2000%, but over the period, over the time you can have. Now offline networking
there is a some kind of the networking जहां पर you can create जैसे like reference कि I have given the reference. Suppose that you told me कि Manish, I require the one I require one insurance for my life. So what I will do, I can give the reference of Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. He is from the LIC. He is a very good person. You can contact. Or if you say, Manish, I am the mutual fund distributor. Can you give me the some reference who want to do the saving or the earn money in for future? So then what I will do, I can give the 2-3 number for my of my friends. I can do 3 phone number of my relative, etc. So that is the reference. So once you got the reference, that is the offline networking में आता है, because you have to create a repo with me. Once you have created repo with me, then you can ask reference to me. Suppose that आपके पास भी एक टेलीकॉलर का कॉल आता है, सर डू यू वांट लोन, आप बोलते नो आई डोंट वांट लोन. देन आफ्टर बिफोर discussing that phone, they ask, sir, do you have any reference? आप कहते no, I cannot provide. But if that person will be your friend for last 10 years, 5 years, 6 years, 2 years, but if they have asked, can you provide me any reference, so definitely you have to think, अरे यार ये मेरा friend है, he has started loan work, so definitely I have to give the some reference, whether एक दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, होम लोन का दे, कार लोन का दे, any kind of the loan, any person who require, I have to connect. So that is the offline networking, and that is the one thing के reference होता है. Second, seminar, event, conferences. When you have attended any seminar, event, conference, वहां पर you have the opportunity to meet at least 10, 12, 50, 200, 500%. Then you have to choose. 100 में it is not possible, 1 day का सेमिनार है या 3 hours का सेमिनार है, it is not possible to collect or meet everyone. So you have to choose कि मुझे किससे मिलना है. अगर आप 20 बंदे का एक सेमिनार चल रहा हो and it is the time of the 2 hours, then 2 hours will be seminar, and after 2 hours you have the 30 minutes या 15 minutes networking time over tea. तो आप ये 15 minutes में तो you are not able to meet all 20%. Then you have to choose, or any person who connected to you, so you have to understand कि whether I have to create rapport with him or not, or suppose that any person has connected with you over tea and you are not interested in that particular person, you want to meet some other person, then how you will excuse, how you will avoid that person, and you will try to meet that person to whom you are interested or your business is interest. Okay, so that you have to understand. Then once you go in the industry association meeting, etc., that again that is the same scenario. You meet lots of person. Referral passing organization, there are lots of referral passing organizations where all category of the businessmen sit together and they refer to each other. So that is also offline networking. Then personal kind of the networking like marriage, party, social event, during travel. Suppose that you have gone शिमला में जाने के बाद आप किसी होटल में रुकते हो, आपके बगल वाले रूम में हो सकता है he is from Chandigarh, you have gone from Delhi, someone from Chandigarh, then you can meet and you can have the some discussion. But generally we don't want to discuss in during the travel. What we do, हम अपने फैमिली के साथ जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, we want to limit own self. But if you try to make some relationship during travel or during in party or marriages, then it will create fruit for you. Suppose that we have gone, I have gone in friends marriage. वहां पर मेरे 2-3 फ्रेंड मिल गया. व्हाट आई डू, मैंने तीनों फ्रेंड के साथ एक कोना में गया, खाया पिया, मस्ती किया, घर वापस आ गया. बट अगर उसी मैरिज में यू हैव ट्राइड टू मीट समवन एल्स, आप अपने फ्रेंड को बोलते कि यार अपने पापा से मिलवा दो, अपने कजिन से मिलवा दो, देन व्हाट विल हैपन, जो आपके फ्रेंड है वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे. व्हाट यू डिड इन मैरिज, यू हैड क्रिएटेड 1, 2 और 3 न्यू कनेक्शन. मोस्ट प्रोबेबली 3 कनेक्शन में एक कनेक्शन आपके साथ कैरी ऑन करें, हो सकता ना करें, लेकिन बट यू हैव ट्राइड.
कम से कम आप ट्राई करना तो शुरू करो। अदरवाइज व्हाट वी डू कि इन एनी पार्टी, मैरिज, सोशल इवेंट जहां पर हम जाते हैं, इफ वी सी नोन पर्सन, व्हाट we start discussion with known person, or we never try to see a stranger on unknown. तो वहां पर जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था, we had the opportunity to meet other person to understand their business, or to create my opportunity for my business, anything, वो नहीं हो पाता है। उसी तरीके से आप जहां पर रहते हो, वेर यू रिजाइड और योर ऑफिस, तो किसी के भी ऑफिस में, सपोज दैट यू योर ऑफिस इन एनी कॉम्प्लेक्स और एनी बिल्डिंग, आस पास ऊपर नीचे देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑफिसेस, हैड यू ट्राई टू मीट? नो, नेवर। आज के डेट पर वी आर रिजाइडिंग इन द सोसाइटी, हमारे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, आई डोंट नो, या पूरे बिल्डिंग में, पूरे फ्लोर में 10th फ्लोर का है, 12th फ्लोर का है, देन वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू नो कि हु डू व्हाट दे डू एंड व्हाट आई डू, आई डोंट वांट। तो वहां पर आप व्हाट वी डू कि हमारे पास आसपास घर और ऑफिस के पास कम से कम 100, 200, 500 आदमी है, घर और ऑफिस मिला के। तो वी डोंट वांट टू ट्राई, वी डोंट वांट टू डू द नेटवर्किंग विद देम। व्हाट वी डू, हम किसी और सेमिनार में जाते हैं, किसी और फ्रेंड के पास जाते हैं कि यार किसी मेरे को एक फ्रेंड से मिलवा दो, मेरा एक बिजनेस का रेफरल दे दो। बट जो हमारे आसपास है हम वहां पर ट्राई ही नहीं करते हैं, जो हमारे हाथ में है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये सबके साथ होता है कि नियर बाय योर ऑफिस, नियर बाय योर रेसिडेंट, वी डोंट ट्राई टू मिक्स अप, we don't do networking with nearby person. So it is the biggest mistake of your life you have to do. Now online, what as you are doing the video conference, what you have the lots of WhatsApp group, Facebook group, LinkedIn, you write the article, yeah, someone has written article, you have read, so there are the lot of promotional email you got, yeah, you can send the promotional email. So this is the online kind of networking where you create. Suppose that in your phone you have 10 WhatsApp group, so 10 WhatsApp group mein hai, so every group at least will have 20%. Generally any group has the 40, 50, 100%, but just I am taking example of the 20%. So suppose you are into 10 group and every group has that 20%, it means ki 200, most probably in 200% at least 100% will be new person. Whether you have tried, because you are into group, अगर आप उनको एक मैसेज ये डाल देते हो, Mr. X, I am with you in this particular group, I want to discuss about you and for my business. क्या आपने कभी ऐसा किया? If you are doing, then you are on the right track. If you didn't do, then whatever you have the around nearby, you have lost your opportunity, because जो ग्रुप में है वो अगर आप उसको ग्रुप के अनुसार मैसेज देते हो, या she has seen your name in that particular group, then तो क्या होता है कि उस पर आपका ट्रस्ट रहता है कि ओ okay, Mr. X is the member of this group since for last year, so I can discuss, because वहां पर आपका कहीं ना कहीं you had created some repo, क्योंकि आप किसी ग्रुप में 1 साल से हो, 2 साल से हो, you are giving some message, or you are creating the some value addition in other life. Suppose that I am the life insurance agent and I have provided one I have provided every week value addition information to my customer, and I am sharing that information in the 10 WhatsApp group, and in 10 WhatsApp group every group has the 20%, so at least I have the possibility of 200 clients. अगर मैं 200 आदमी को दरवाजा ठकठकाऊंगा, कॉल करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली एक आदमी मेरा जरूर क्लाइंट बनेगा। लेकिन व्हाट वी डू कि हम यहाँ पर अपने क्लाइंट नहीं ढूंढ के हम बाहर जाते हैं, आउटसाइड जाके मेहनत करते हैं, जहां पर हमें we have to work from the scratch, from नील से बात करना होता, जीरो से काम करना होता। लेकिन जहां पर we have done some building, some work, वहां पर हम अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम अपना नेटवर्किंग स्किल यूज नहीं करते हैं। दैट यू हैव टू डू। नाउ टाइम फॉर नेटवर्किंग। नाउ यू विल से कि आई एम इनटू जॉब, 10 to 6 का जॉब है या 10 to 8 का जॉब है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई डोंट हैव द टाइम।
सम बिजनेसमैन से कि मैं तो बस सुबह बिजनेस में जाता हूँ 2-3 घंटा अकाउंट्स के साथ, आई हैव टू स्पेंड द टाइम 2 and 3 hours विथ अकाउंट्स, आई हैव टू स्पेंड 3 hours फॉर द ऑपरेशन, आई हैव टू फॉलो अप सेल्स, so I don't have time for the networking. Then it is a myth, and you have to think कि every business person or business person has to do the network 4 to 6 hours. Professional as a doctor, chartered accountant, advocate, computer software, any kind of the professional, he has to spend at least 3 to 5 hours. Or salary person, if salary person say कि I cannot do because 10 to 6 or 10 to 7 I have job, so in that scenario you can spend at least 1 to 2 hours. अब ये आप बोलोगे कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सुबह मैं 7-7:30 बजे उठूंगा, तैयार होके ऑफिस जाना है, और 10 to 7 आई हैव टू डू वर्क, फिर घर आने के बाद मुझे बच्चे फैमिली के साथ स्पेंड करना है। एज बीइंग द सैलरी पर्सन आई डोंट हैव टाइम, और मैं 1 से 2 घंटा भी नेटवर्किंग पर नहीं दे सकता हूँ। तो दैट आई विल कंफर्म, मतलब आई गिव द सम टिप्स टू यू कि कैसे आपको टाइम यूज करना है। इफ यू आर प्रोफेशनल और बिजनेसमैन, और इफ यू से कि नो आई डोंट हैव टाइम, देन आप यू कैन नॉट ग्रो। आपको यू हैव, इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, योर प्रोफेशन, आपको नेटवर्किंग में टाइम देना ही पड़ेगा। इफ यू आर कैन नॉट डू, देन व्हाट विल हैपन, आप देख लेना कि इफ यू आर नॉट गिविंग द टाइम 3 to 4 hours या 5 hours फॉर योर नेटवर्किंग, तो जो पिछले 3-4 साल में आपका टर्नओवर था या जितने लोगों के साथ यू हैड रिलेशनशिप, उसमें 2-4-5% इंक्रीज हुआ होगा, 50 या 100% का इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये आप खुद एनालाइज करना। नाउ अब मैं उस बात सैलरी पर्सन की बात करता हूँ, या जो जॉब में है, कि जो कहते हैं कि 10 to 8 या 10 to 7 आई हैव जॉब, आई डोंट हैव टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ हाउ you have to manage your time, how to you have to manage your time में क्या है। suppose that you are taking metro or you are taking car sharing, यार, और you are taking train, तो यहाँ पर आपके पास कम से कम half an hour और 1 hour है। तो what we do in metro, generally I work in metro, कि अपना मोबाइल ओपन करते हैं, they start to play game और watching web series और watching film, anything, या दे आर प्लेइंग गेम। इस तरीके का कोई भी टाइम आप 1 से 2 घंटे लगाते हो, दैट व्हाट यू हैव टू डू, कि जो आपको पिछले 1 वीक में या 1 मंथ में या लास्ट में जो दैट पर्टिकुलर पर्सन यू हैव मेड, उस बंदे से आपको कैसे नेटवर्क करना है, क्या मैसेज डालना है, क्या ईमेल करना है, आप उस ड्यूरिंग दैट ट्रैवलिंग टाइम आप यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आप कहते हैं कि नो मनीष, आई डोंट टेक metro, I don't take share car, I go by my own car and I have to drive. That is not possible for me for the during traveling time. Then once you reach office, आप वहां पर 10 मिनट टाइम दे दो। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हैं, फर्स्ट यू हैव टू टेक टी, आप चाय लेते हो, उसी टाइम आप 10 मिनट लगा दो, चाय के साथ साथ 10 मिनट लगा दो, क्योंकि चाय पीते के साथ तो आप ऑफिस का काम तो कर नहीं रहे, यू आर नॉट डूइंग योर ऑफिस वर्क, तो व्हाई नॉट यू कैन स्पेंड द 10 मिनट्स तो थिंक यार कल मैं किससे मिला था एंड हाउ आई हैव टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर पर्सन। फिर लंच के टाइम पर व्हेन you have outside, वहां पर just you have to apply your mind कि what kind of the message I have to send and how I can create some value addition in that particular life, और you are into job, तो लास्ट जॉब से मैं छोड़ के आया था, तो उसके बॉस से मैं कैसे कनेक्ट में रहूं ताकि नेक्स्ट टाइम आई हैव टू चेंज माय जॉब और एनीथिंग, तो ही विल हेल्प मी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज है। इन मॉर्निंग ड्यूरिंग टी 10 मिनट्स, लंच के टाइम पर 10 to 15 मिनट, एंड once you have left office, before starting your car, you can sit in your car, or you can spend 10, 20, 15 minutes to call or to give the message etc. जो आपने सुबह से शाम तक सोचा था, वो सुबह दोपहर में सोचा था, शाम में उसको मैसेज या कॉल कर लो, then you can manage your time। और for how you have to manage for time और networking कैसे करना है, इसके लिए I have the workshop that we will discuss after end of webinar। Now when you have started your networking, so time, location and interest is important। Suppose that you and me met in one marriage and I have interest in sports, or you are talking about the politics, so what will happen, 1-2 मिनट में आपका बात सुनूंगा, I will listen your talk 1 and 2 minutes, and after 2-3 minutes I will try to avoid you and meet to some other person। Then when you are meeting someone, whether it is in marriage
in party, in business conferences, or anywhere, then you have to understand what is the interest of other person, and according to interest of the other person you have to start your discussion. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो it will create some problem, and problem is that you cannot create rapport with that particular person. And location is also depend. Suppose that you have gone in the um, suppose that you have gone in the जहां पर किसी का मौत हो गया, anyone has died, and you have discussed about कि my business is I had the turnover of the last year 10 crore, now I have increased turnover of the 20 crore 15 crore. इस तरीके से if you have start giving your joy, happiness or etc, that in the sad moment, then it will create the problem for you. तो कौन सा लोकेशन पर आप क्या हो, सामने वाला का इंटरेस्ट क्या है, कौन सा टाइमिंग है, सुबह है शाम है, व्हाट काइंड ऑफ द कन्वर्सेशन यू हैव टू स्टार्ट, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कंसीडर, सो यू कैन क्रिएट द गुड रेपो और यू कैन क्रिएट गुड नेटवर्किंग प्रोसेस. अब यहाँ पर जो मैंने बोला था concept of 24 multiply 7 multiply 30. So before starting concept of the 24 multiply 7 multiply 30, just I want to ask any with all participant कि यहाँ तक कोई confusion, कोई problem है तो you can ask any question, otherwise I will go ahead. अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, I start what is the concept of 24 multiply 7 multiply 30. Then after that you can ask on any question if you want. So 24 multiply 7 multiply 30. Excuse me. Yeah. Hello. Yeah, I hello. wanted to know if somebody is not working. If somebody is not working, then Okay. how about networking for them? Suppose that you have completed your study and you are searching your job, or you don't want to search your job and you are not working, or you are housewife. Okay, then networking you have to do with your family, your nearby, or whatever you have the hobbies. Suppose that you have the hobby of making food, then you can you have to find out friends or any location online or offline where your related to your hobby person is meet. जैसे you want to do cook, you want to do cooking, और वहां पर आपने ऑनलाइन में you have seen the one webinar is going on for the cooking or concept of the cooking etc, you can join. So what will happen, वहां पर whatever the 10 to 20% will come, that will be your like minded, then you can create your networking. As like nearby, suppose that you are any student who is the 25 years 26 year and he is doing the preparation for the government job and the any private job, but right now he didn't get any job, then he can do with his friend circle, with nearby location, or every student or every person has some hobbies. So उस hobbies के अनुसार, suppose that he has the hobby of the photography, he has the hobby of the ट्रैकिंग, और ही हैज अ हॉबी ऑफ द साइकिलिंग, तो फेसबुक पर साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और व्हेन ही इज डूइंग साइकिलिंग इन द नोएडा, गुड़गांव, एनीवेयर, ही गॉट द सम अदर ग्रुप व्हिच दे आर डूइंग द साइकिलिंग विद 10% 20%, so he has to discuss, or he has to mix up that particular person. Okay, thank you. Yeah, now I have to discuss about the concept of the 24 multiply 7 multiply 30. तो अब इसमें concept में what happened कि आज मैं किसी वेबिनार, किसी कॉन्फ्रेंस, सेल्स कॉन्फ्रेंस में गया, या किसी फिक्की का कॉन्फ्रेंस था वहां पर गया, या किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया, and in that conference approx 200% was available. मैं वहां पर 10% से मिलता हूँ, just I met the 10% and I have taken the card and even I have given my own business card. मैं 10 कार्ड लेके घर आ गया. What we do, 10 कार्ड या 15 कार्ड या 20 कार्ड, whatever the card you have collected in any seminar, in any conferences or anywhere, what we do,
घर आते आते तो लगता नो, दिस पर्सन इज अ वेरी गुड फॉर माय बिजनेस और गुड फॉर मी, एंड डेफिनेटली आई विल कॉल हिम। नेक्स्ट डे ऑफिस में या जॉब पर व्हाट विल हैपन, ओके, ओ कल कॉन्फ्रेंस में गया था, ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ पहले मैं ना, जस्ट आई फिनिश माय रूटीन वर्क, देन आई विल कॉल और आई विल मैसेज हिम। वो 2-3 घंटा शाम होते थे, अच्छा ओ शाम हो गया, चलो टुमारो आई विल डू। तो ये क्या होता है कि वॉट एवर कार्ड यू हैव कलेक्टेड, वेदर इट इज द 10 कार्ड, 20 कार्ड्स या 30 कार्ड्स, आप एकाध कर पाते हैं, या फिर यू आर नॉट एबल टू गिव द मैसेज और यू आर नॉट एबल टू गिव कॉल टू देम। तो व्हाट विल हैपन कि जब 2-3 दिन तक आप उस बंदे से कनेक्ट नहीं होते तो वो बंदा भी भूल जाता है, वो सामने वाला भी बंदा, क्योंकि एज यू गॉट द कॉल आफ्टर 10 डेज कि सर मैं आपसे उस कॉन्फ्रेंस में मिला था, तो यू आर नॉट एबल टू रिकॉल कि उसका चेहरा क्या था या व्हाट ही हैड द बिजनेस। लेकिन अगर वो जस्ट इमीडिएट कॉन्फ्रेंस से 24 आवर के अंदर ही आपको कोई कॉल करता है या मैसेज डालता है, सपोज दैट आई हैव गिवन द मैसेज टू यू कि मैम आई हैव मीट in Fiki seminar, and this is myself Manish, and I do this business, and what you do, अगर ये मैसेज डाल दिया तो once you read my message, तो what will happen, अच्छा मनीष अगर you have taken my card तो मे भी आप सारे कार्ड सर्च करोगे, you can recognize me कि who was Manish, okay। तो within 24 hours you have to send at least one short message, if you are able to do call then do it, otherwise at least you have to give the short message कि मैं Mr. XXX I have met there and I have the this kind of the business, or you can ask कि what you do and I want to meet with you, so we can know each other। इस तरीके से whatever kind you have to create the some personal message और आप उसको शेयर कर सकते हो। इफ ही हैज रिप्लाई, अगर आप ये काम 10 आपने 10 या 15 कार्ड लिया, 15 लोगों को आप ये रिप्लाई मैसेज डालते हो, तो डेफिनेटली 20 या 30% विल मैसेज पर्सन विल रिवर्ट बैक टू यू। तो 20 में से अगर 15 लोगों 20% 4 लोगों ने भी आपको रिवर्ट बैक किया है, तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है 7 डेज का, 24 आवर में यू हैव गिवन द मैसेज, within 7 days what you have to do कि उसका जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, लिंक्डइन या इस तरीके से कुछ भी है, तो आप उसको वहां पर फॉलो करो, या आप उसको रिक्वेस्ट भेजो, फ्रेंड रिक्वेस्ट, ताकि वो भी आपको रिकॉग्नाइज कर सके, अच्छा ओके दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज मीट इन सेमिनार, अच्छा ये काम करता है, चलो मैं इससे दोस्ती करता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, ये आपका ऑनलाइन नेटवर्किंग क्रिएट होगा। once he has accepted your friend request or you have accepted his friend request, तो फिर आप उसके बारे में जानने का ट्राई करो उसके प्रोफाइल में कि व्हाट काइंड ऑफ द बिजनेस और व्हाट काइंड ऑफ द जॉब ही इज डूइंग। अगर आपका कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबी जो से मैच करता है या फिर बिजनेस का इंटरेस्ट मैच करता है, सपोज दैट आई एम द इंश्योरेंस ब्रोकर और ही इज द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, देन इट इज द it can be tie up situation, suppose that he is not an insurance guy or I am not a mutual fund guy, then we can have the some tie up कि सर आपके क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, आई कैन प्रोवाइड, अगर मेरे क्लाइंट को म्यूचुअल फंड की जरूरत है तो आई कैन रेफर टू यू। तो इस तरीके से यू हैव टू सी सम म्यूचुअलिटी कि आप किस तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हो। तो विद इन 7 डेज आपको उसके सोशल नेटवर्किंग में कनेक्ट होना है, और विद इन 30 डेज जब आप उसके सोशल नेटवर्किंग से कनेक्ट हो जाते हो, तो विद इन 30 डेज वेदर इट इज आफ्टर 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज, आप यू कैन गिव ए कॉल कि सर आई वांट टू मीट यू फॉर द मोर डिटेल डिस्कशन, या सपोज दैट यू आर इन दिल्ली और ही इज इन बॉम्बे, तो इफ यू हैव गॉन बॉम्बे, so you can give the call or you can give the again message कि sir I was in Delhi, now I am in Mumbai for the 3 days, can we meet। तो उससे if we have some time और आपने ये पर्टिकुलर प्रोसेस किया है कि 24 आवर में आपको हाई हेलो हुआ, उसने भी रिवर्ट किया है, 7 डेज में यू हैव गिवन द योर फ्रेंड रिक्वेस्ट और यू हैव एक्सेप्टेड हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो कनेक्शन बन चुका होगा, तो वो मिलने से मना नहीं करेगा। 5 आदमी को 10 आदमी को बोलोगे तो कम से कम 2 आदमी मिलेगा, जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं तो आपका रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द 24 × 7 × 30, मतलब 24 आवर, 7 डेज और 30 डेज व्हाट यू हैव टू डू। या नाउ अब आप लोग को यहाँ पर कोई भी सवाल हो देन यू कैन आस्क एनीथिंग।
अगर आप में से किसी का सवाल नहीं है तो जो मैं एक पेड वर्कशॉप की बात कर रहा था उसका मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोग को दे देता हूँ, फिर आप लोग को अगर कुछ भी है उस किसी से रिलेटेड यू कैन आस्क मी कि इट इज अ 3 डे वर्कशॉप है। यहाँ पर हाउ यू हैव टू क्रिएट डेटा। नेटवर्किंग आप जब करते हो या फ्रेंड में, फैमिली में, मैरिज में मिले हो तो आपको कैसे डेटा क्रिएट करना है। क्रिएशन ऑफ द रिकॉल वैल्यू, जैसे कि पेटीएम वाला का एक रिकॉल वैल्यू है, पेटीएम करो या 2 मिनट में मैगी बन सकती। इस तरीके से आप ऐसा क्या उस स्ट्रेंजर से या उस बंदे से मिलते हो तो आपको क्या इमेज क्रिएट करना है, व्हाट यू हैव टू से, कि जहां से वो आपको याद रख सके। फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट, जो मैंने आपको बताया, अगर आप सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट, इवन तो मेरा जो अपना क्लोज फ्रेंड है ना वो भी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट देता, उस पर भी गुस्सा आ जाता, लेकिन ही इज द माय फ्रेंड फॉर द लास्ट 10 ईयर। नहीं कुछ बोलता, ठीक है यार जो करता है देखने दो। हो सकता है मे भी आपके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है कि जो सुबह शाम मैसेज भेजता है उसका तो व्हाट्सअप फोटो वाला तो दिखता ही नहीं हो, अगर कोई काम का मैसेज होता है तब देख पाता हूँ, अदरवाइज तो देखता भी नहीं हूँ। तो यू हैव टू लर्न कि फ्रिक्वेंसी टू कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। देन डिजिटल प्रेजेंस कैसे करना है, जैसे कि यू हैव फेसबुक अकाउंट, यू हैव द इंस्टाग्राम अकाउंट, यू हैव द ट्विटर अकाउंट। व्हाट यू डू, मेक लाइक, सपोज दैट यू हैव सीन माय फोटो, आपने लाइक कर दिया। लाइक करने से क्या होगा, और हैड यू थॉट कि उसमें कमेंट करने से क्या होता है। सपोज दैट मैंने एक फोटो लगाया, 100 लोगों ने लाइक कर दिया। लाइक लाइक कौन, लाइक का व्यू कौन देख सकता है, मैं देख सकता हूँ कि किसने लाइक किया या नहीं किया। इफ यू हैव गिवन द सम कमेंट, मनीष यू आर लुकिंग नाइस, योर ड्रेस इज वेरी नाइस, इस तरीके से आप कुछ भी कमेंट करते हैं, व्हाट विल हैपन, वो जो कमेंट है ना दुनिया को दिख रहा है, सिर्फ मनीष को नहीं दिख रहा, दुनिया को भी दिख रहा है कि आपने व्हाट यू हैव गिवन द कमेंट। सो यू हैव टू क्रिएट द डिजिटल प्रेजेंस इन फेसबुक, इन इंस्टाग्राम। यू डोंट हैव द ओन कंटेंट तो दूसरे के कंटेंट पर अपना डिजिटल प्रेजेंस करो, अपने कंटेंट पर तो करना ही करना है। इफ यू डोंट हैव योर कंटेंट देन यू हैव टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस इन फ्रंट इन अदर कंटेंट, कि कैसे आपको करना है। देन क्रिएशन ऑफ द ईमेल सीरीज, कि आप फ्रेंडशिप ही करना है या बिजनेस प्रमोट करना है तो कैसे आप ईमेल सीरीज को क्रिएट करोगे एंड व्हाट विल हैपन। तो ये सारा चीज करना होता है। तो दैट इज द 3 डे वर्कशॉप जो हम और सवाना जी आपको ग्रुप पर एक बार बाद में बता देंगे कि कब शुरू होना है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टार्ट इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। और कॉन्सेप्ट 24 × 7 × 30 जो मैंने अभी शॉर्ट में बताया, हाउ यू हैव टू अप्लाई एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड द फॉर्मेट, वो डिटेल में हम फिर वहां पर डिस्कशन करते हैं।